Gurutam. So today we have to learn about motion. This is our topic. Okay. So Anika, can you just tell me what do you know about the motion? Anything? Motion is basically when an object is covering distance in a certain amount of time. Okay, that's fine. Okay. Anything else which you know? Anything else? Anika? No, sir. No. Okay, fine. Sana, what do you know about the motion? So I think it's motion is something when an object it is moving Mm-hmm. from a particular point, Okay. and it's like not stationary but like in motion. That means it moves. Right. So motion is what? Motion is, you can just imagine here that if I will draw, suppose this is a car. This is what? We have a car, and right now this is the position I am taking as A, right? So now my car will move, and after some time what will happen? My car will reach here, right? So we are looking at the position of my car, or you can say the bus, whatever we have taken, is changing, right? So here we can say position. All of you can see what I'm writing here. Is it visible for you? Yeah. Okay. So we can say here the position changes, right? Position changes. So do we take some references also? Yeah, so the reference point is the Yes. stationary object. Right. So with respect to, WRT means with respect to a stationary object or a stationary body, you can say. Okay. What you can say? Stationary body. So with respect to the stationary body, if we have looking that a bus or a car is changing the position, so we can say that the body is in, or we can say the bus is in motion, right? Is that clear, both of you? What is motion? Yeah. Okay, so for definition, you both of you can note down. I'm just going to upload it. So for the definition, you need to note it down. This I will upload here. Okay, all of you, both of you can see this part. Can you see this? Okay. Yeah. So please make a note of. Please make a note. A body is said to be in motion or moving when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. So basically, if a body is in the motion, it means that it will change the position, right? With respect to a stationary body. Please note it down in your notebook. This, only this, the red mark. I have underlined with the red color. That one you need to note it down. And our topic is motion. I will switch off my phone. Yeah, is it done? Shall we proceed? So can you give me a minute, please? Okay, take your time. After this point note, you can tell me so I can move. Sir, I'm done. Done. Okay. Now my voice is clear with you. Yeah, sure. Okay. Okay. So Sana, are you done? So I'm on the last line. I just need one more minute. Okay, take your time, no problem.
And have you noted this one below? After this statement, body is said to be the motion. Okay, you need to note down this part. I will just show you this one. Position changes with respect to a stationary object. Please make a note of this also. This is, you will write down as a note in shortcut, in short form, what is motion. For that purpose, you need to note it down. Done? I'm done with the definition, but the arrow part I need to write. Okay. और इसके आगे आप लोग लिख लेंगे note. You will write note. So yeah, I'm done. Okay, fine. Okay. So your voice is getting lower. Like when you started talking about the position change, it's like kind of gotten lower. Okay. Now is it better? Yeah, now it's fine. Okay. Might be some मेरा mic का issue हो सकता है. So I'm done. Okay, done. Okay, fine. Okay. So we are done till here. So we have understood that what is the definition of the motion, right? Okay, guys, just give me a second. Okay. What is rest? What we called it as rest? The word come rest. Rest is basically when an object is not covering any distance in a certain amount of time. Okay. So rest is what? So if anybody, just reverse of the motion, if anybody does not change its position, does not change its position with respect to stationary object. So now your voice is like very bad. It's some like disturbance kind of thing is coming. Okay, disturbance. Okay, now it's fine. Yeah. Okay. So if anybody does not change its position with respect to the stationary object, the body is said to be in rest. Is this clear with you? Please make a note of it fast. Noted? Done, So guys? done. Okay. Give me a moment. Just give me a second. Okay. So I just want to show you here one image. Okay. Yeah. Just wanted to show you. Copy. Okay. Here. Okay. Guys, can you see this image? Yes, sir. Okay. So basically what happening, this girl is traveling in a bus. This girl is traveling in a bus. So she is in rest or she is in motion? Anika, can you tell me about it? She is in motion because she's sitting. I mean, inside the bus. Oh wait, no, she's in motion because like the vehicle she's sitting isn't moving. I have asked one question. She's in rest or she's in motion? She is in motion, I guess.
Yes. Okay, Sana, what about you? She's in rest or think motion? she is in rest because it's not her that's moving, it's the bus that is moving. Okay, now here is the contradictory. Anika is saying she's in motion and you are saying she's in rest. Yeah. So which answer is correct? Actually, my question was not appropriate. My question was not appropriate. क्यों यहाँ पे appropriate मेरा question क्यों नहीं था? मैंने just simple सा पूछा कि she is in motion or rest, right? I have not taken the reference. मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे physics में थोड़ा सा मैं कभी कभी opposite भी जाता हूँ, negative में भी जाता हूँ. क्यों? समझाने के लिए. तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से question पूछा कि ये rest में है या motion में है, right? तो यहां पर सिंपल सा आपका सवाल होना चाहिए था, सर किसके रेस्पेक्ट में. अब देखिए मैं सिनेरियो बताता हूं. इफ आई टेक द सिनेरियो अबाउट द गर्ल एंड द बस, व्हाट रेफरेंस आई हैव टेकन? गर्ल एंड द बस. सो नाउ the girl Then is, it is in motion. yes, But then if it's only the girl, then it is in rest. wait, girl and the bus I have taken, right? So here what will happen, girl is sitting inside the bus, the girl is sitting inside the bus, so there is no motion. Okay. गर्ल बस के अंदर कुछ मोशन कर रही है क्या? चल रही है क्या? नहीं That's चल what I said. That's what I wanted to say. Yes. That she's sitting, so she's not doing anything, but the body that she is sitting in is moving. राइट. सो नो मोशन. सो अगर गर्ल और बस की मैं सिर्फ दो चीजों की बात करूं, दैट मीन्स आई एम टेकिंग द रेफरेंस एज अ बस. बस के कंपेयर में in comparison with bus, girl is not moving, so she is in rest. Can I say that? Yeah. Anika, is that clear? But if can you hear me? Okay, so But I don't know. yes, tell I me. don't know whose voice it is, but there's some those kind of buzzing noises, static noises. Okay. A buzzing noise is coming. Okay, now it's fine. Yeah, it Okay, is. now I will take the scenario here. The girl and road. If I compare the girl and the road means street. So in this comparison, bus is moving as compared to road. So if the bus is moving and girl is sitting inside the bus, so the girl will also move. The girl will also move. So for this scenario, if I have taken this respect, I'm taking the comparison with the road, a street, or you can say the earth. So the girl is moving. Why I have taken these two scenarios? So you can easily compare that for which reference we are talking. So if I have taken the reference for the bus and the girl, so for that she is in rest position. But if I take the comparison, the reference as a earth, so in that case the girl will move. The girl will be in the motion. Is that clear with you? Yes, sir. The concept is clear, Anika? Anika, the concept is clear? I think आपका माइक सही से काम नहीं करा निका. Hello. Okay, sir. Yeah, I can hear you. I'm saying something. Can you hear me? Yes. So concept clear हुआ आपका? Can you hear me? Yes, I can hear you. हाँ सर हो गया. Okay. अच्छा मेरा क्वेश्चन है आप दोनों के लिए. Right now, both of you are sitting on a chair, on a table, or on the sofa, right? So right now, are you in motion or are you in rest? In rest. You are in rest. Okay. And what about Anika? You? Anika, you are in motion or rest?
हेलो, आपके अनिका माइक जो है वो निकाल कर एक बार फिर से इंसर्ट कर दीजिए सिस्टम में, जो पॉइंट है उसको। अनिका, कैन यू हियर मी? गिव मी अ सेकंड। यस अनिका, कैन यू हियर मी नाउ? Anika, can you hear me? So I'm calling her. No problem. Anika, yes, I think we can hear you now. Hello? No, the voice is not coming. Oh, put in. Yes, Anika, is that fine with you? आपने mic, okay, you can text me the chat, no problem. So you, Anika. Wait, just keep quiet for a minute. I'm trying. So I have Anika on my phone. You can talk to her from here and tell her what is wrong. अनिका, आप जो है अपना माइक एक बार निकाल कर और वापस से उसको इंसर्ट कर दीजिए। आई थिंक वो ठीक हो जाएगा। आई थिंक वायर में कहीं कुछ इशू आ रही है, इसीलिए। How to do that? Like, should I unmute and then mute again? नहीं, अनम्यूट नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ करना क्या है। How do I connect with audio again? Okay, and You leave the call and join again, I think. yes, now I think Anika, can you hear me through this Zoom? Can you hear me now? Yes, I can hear you. So that's because she's on the line on my phone. It's not coming from the computer, it's coming from my phone. Just give me a second. Okay, Anika, can you hear me now? Anika, can you hear me? No. Let's wait for her. I think she will join it. So we should do Google Meet next time. Google Meet पे जो facilities हैं वो नहीं मिलेंगी आपको। Yeah, it is bad, but still Zoom is better. नहीं, Zoom में बहुत सारे options हैं, like screen recording option है। Recording is there in Google Meet also. Recording उसमें बहुत heavy हो जाता है, which doesn't support my softwares. Okay, Zoom is actually pretty good, but like Zoom has connectivity issues at times. नहीं, मैं तो villages में अभी कर रहा था, वहां से कोई इशू नहीं आया। कभी कभी किसी का होता है, that's okay, but मैं तो बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ। इवन मेरी इवनिंग की जो बैचेस हैं उसमें गांव से, मींस बहुत विलेज एरिया से बच्चे जुड़ते हैं, and there is no problem. इन्होंने इनके घर पे वाईफाई है क्या है, मतलब? Wi-Fi है, I think. Okay. But right now sir it's raining also ना, so maybe उसकी वजह से भी हमारे कोई issue बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं तो जूम पर करीबन अभी बहुत ज्यादा storm चल रहा था and it started to rain. हाँ, that is the situation. तो पॉसिबिलिटीज हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते फिर, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आई थिंक शी केम बैक। ओके, क्योंकि जूम से तो मैं बहुत मतलब। No, but wasn't 6:30 to 7:45 supposed to be Hello, the sir. Can you hear me now? Yes, Anika, I can hear you. Yes, and आप बोल रहे थे कुछ? I'm saying that wasn't this supposed to be the. Hello, sir. Can you hear me now? Yes, Anika, I can hear you. Can you hear? Oh wait, I'm wearing headphones. Sir, can you hear me now? Yes, I can hear you. Great, thanks. Okay. Yes, and आप कुछ बोल रहे थे? I was saying that wasn't 6:30 to 7:45 supposed to be the batch when
you were taking classes for like 20 kids or something. Yes. So then how are we two only there in this batch? No, so you will be there, no problem. No, but like, isn't this the time when you're supposed to take classes for those people also? So how are you matching the classes? How can you take both of them? Don't worry about it, I will do that. Okay, आप focus करो studies पे, आप इधर नहीं, इधर उधर focus मत करो. मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो. Okay. And okay, अच्छा एक चीज आप मुझे बताइए, स्कूल में आपके कैसे होता है? स्कूल में स्क्रीन शेयर करते हैं या फिर वो व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं वैसा कुछ? So they like screen share the book, or sometimes they screen share like a whiteboard where they type and then they teachers. No, but with our teacher, Ashu ma'am, what she does is she shows a whiteboard from her house. Okay. She's writing on it, and we're seeing her writing on her house whiteboard. Okay. Yeah, even our physics teacher does that with other teachers screen share. Okay. Ma'am, no? Okay, no problem. Okay. What? Nothing. Okay, don't worry. So here you will find out the difference how we do. Okay. Okay. Sorry. Okay, so here I was talking about the rest and the motion. So these two are clear, right? And I have asked the question that you are sitting on your sofa, chair, or whatever table. So you are in the rest or you are in the motion? We are at rest right now. Okay, rest. What about Sana? With respect to like our Rest. building. But if I say that no, you are in motion, then Yeah, we are in motion in a way if we take it with respect to the earth, or like if someone is looking at us from outside of earth, they see us. yeah. If I say compared to if I'm comparing in the universe, like I'm on the Mars, I'm on the moon, right? So for the person who is on the moon or the Mars, outside of the earth, right? So for them, we are in the motion because earth is rotating, earth is moving. So he will or she will see us. So he will thought that we are also moving, right? So comparison is very, very important while saying you are in the rest or you are in the motion. Is that clear? Is it clear, both of you? Yes, sir. Yes, sir, it is clear. Okay, now we will proceed. Just give me a second. Okay, so we are done till here. Okay, now we have to learn the new topic we have, that is called distance. Do you know what is distance? Yeah. Tell me. Distance is basically like the difference of path between 2 points. Difference between the path. Okay, and then what about the displacement? Displacement is the shortest route between point A and point B, or like the 2 points. तो वो भी तो वही चीज हो गया. No, displacement is the shortest route between two places, but distance can be like, it can either be the displacement or it can be a longer route than that. It's not always necessarily Okay, okay, fine, no problem. Please make a note. The total length covered. Total length covered is called distance. Please make a note of it. It is a scalar quantity. I will talk about the scalar, don't worry about it. Third point, the SI unit of distance is meter. Please make a note of it, these 3 points first. Noted? Yes. Okay, now I'm coming to the thing distance. So now you can see here, I will utilize, okay,
Suppose that I have taken this point, I have taken this point, this point, this point. So just give me a second. This point. So giving the name here, suppose this is the house and this is one park, this is a shop, this is your school, and this is you can say park 2. You can take it park 2. So the house you can consider here, the house to park is about 2 kilometer. This is the 1 kilometer. The shop to school is about 3 kilometer, and this is about you can say 1.5 kilometers. Okay. So if I ask here, what is the total distance? If I ask here, what is the total distance? So what you will do for finding the total distance? So we will see total length covered. So you can see I'm moving in this way. I'm moving all the points. I'm going to cover all the points, all the distance. So the total distance, we will add them together. What we will do here? We will add them together. So it will become here 2 plus 1 plus 3 plus 1.5. So it will be how much? It will become here 5, 6 and 7.5 kilometers. Right? Yeah. Okay. So please make a note of it. Draw this diagram. So, sir, when the person is Mhm. moving from the house to park and is covering a distance of 2 kilometer, Right. I think as far as I remember what I did, when it's a straight line like this, then the object is at rest. Pardon? What you said? No, I'm trying to say that when the house and the park as concerned, like between these two places, Mhm. is the person who is moving, like covering the distance of 2 kilometer, is that person at rest or like The moving? person is moving. The person is moving. No, but in a graph, isn't rest represented in I a will come to the graph. Don't worry. No, so this is don't think about this is the graph. I have not drawn the graph. Okay. मैंने जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि एक बच्चा जो है अपने घर से निकला और वो पार्क गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने दे दिया. राइट. अब पार्क से गया एक दुकान पर, कोई शॉप है वहां पर गया, उसके बीच का डिस्टेंस दे दिया मैंने. फिर दुकान से वो अपने स्कूल चला गया. राइट. तो मतलब कि अगर उसे यहाँ जाना है स्कूल तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 2 + 1 + 3 टोटल 6 किलोमीटर ट्रेवल करके वो अपने स्कूल पहुंचेगा. और स्कूल से फिर अगर उसे पार्क जाना है तो उसको 1.5 एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा. टोटल उसको यहाँ पार्क 2 पहुंचने के लिए 7.5 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा. राइट. अभी आप लोग ग्राफ पर मत जाइए. आई विल कम टू द ग्राफ सेपरेटली. ये ग्राफ नहीं है. मैंने एक्स और वाई एक्सिस कुछ बनाया यहाँ पे क्या? नो. तब उसके लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, फिर एक्स वाई सब में डिफाइन करूंगा. दिस इज नॉट द ग्राफ. ओके. बस मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है. इज दैट क्लियर विद यू ऑल गाइस? अनिका? Yeah, it's clear. यस. सो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर जो है, अब देखिए मैंने इसमें एक चीज दी है. क्या मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, फिर मैं राइट हैंड साइड जा रहा हूं, फिर मैं ऊपर जा रहा हूं? क्या मैंने डायरेक्शन पे कोई ध्यान दिया है? नहीं. I have not considered the direction, right? I have just taken the value, how much I am moving. So 2, 1, 3, and 1.5. I have taken just that. I'm not taking the direction, right? That is the reason the distance is a scalar quantity. Distance is not a. आपने scalar and vector पढ़ा होगा, right? पढ़ा है आपने? Hello? Yeah, we have learned it. Yes. Yes. So please आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं स्केलर एंड वेक्टर के बारे में बता देता हूं क्या है. डिस्टेंस पहले नोट कर लीजिए. हो गया नोट? Yeah. सना नोट हो गया? नो सर, जस्ट अ मिनट. ओके. अच्छा, आपको ये क्लियर विजिबल है ना जो मैं लिख रहा हूं? Yeah.
Okay. Do it fast. Shall I move? Yes, sir, you can move. Okay, I'm So moving. Sana is done. Shana is done? Sana, are you done? I'm done. Okay, I'm moving now. Okay, so यहाँ पर एक word आया था scalar and vector, right? So I will write it down here. Scalar and vector. Scalar quantity बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Quantity. Vector को vector quantity. ये आपने आई थिंक ग्रेड 7 में पढ़ा होगा. एक्चुअली इसमें होता क्या मैं बता रहा हूं. स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही फॉलो करते हैं. वी ओनली फॉलो द मैग्नीट्यूड इन द स्केलर क्वांटिटी, बट इन द वेक्टर क्वांटिटी वी कंसीडर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. Magnitude and direction, we consider it. Please make a note of it. मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैंने यहां पे लिखा 5 मीटर. मैंने क्या लिखा? 5 मीटर. सो दिस वैल्यू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड. ओके, और अगर मैं यहां लिखता हूं ऐसे 5. So I didn't get the magnitude part. ओके, मैग्नीट्यूड में अच्छा मैं एक एग्जांपल लेता हूं. आप एप्पल. Sir, Yes. magnitude, is it only like the distance के symbols or is No, it no, also no, 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 not a case of the distance only. We have many examples. I'm just telling you. Okay, just give me 1 minute. I will explain to you. सना, आप जो है कभी एप्पल खरीदने जाते हैं? दुकान वाले को क्या बोलते हैं? एप्पल देने के लिए. तो दुकान वाला पूरी दुकान आपको दे देगा? नहीं, a quantity of apple like 1 kg. Yes, 1 kg, 2 kg. You say the quantity, right? Yeah. So magnitude is just what? Magnitude is just like a quantity. Or in another word, I can say how much. Local language में हम इसको बोलेंगे how much, कितना. So then what exactly does scalar quantity mean? Like a measured quantity? Yes, a measured quantity you can say, right? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो जाता है how much, कितना है. मैं एक एग्जांपल और लेता हूं. जैसे मैंने बोला 5 न्यूटन. What I said? 5 न्यूटन. तो ये जो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये 5 वैल्यू है, ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को. क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी मींस मैग्नीट्यूड को. Is this clear now? Is this clear, both of you? Yeah. Okay. लेकिन याद रखिएगा, force is not a scalar, it's a vector quantity. Force is not a scalar, it's a vector quantity. I will explain how. Don't worry. So magnitude मतलब how much. How much जो होता है उसका मतलब हो गया कि कितना है. तो जो सिर्फ कितना है पूछता है, उसको किसी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. राइट? इफ आई कम हियर फॉर वेक्टर क्वांटिटी, सो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 5 मीटर इन ईस्ट. व्हाट आई हैव टेकन? 5 मीटर इन ईस्ट. मतलब क्या हो गया कि मैं इस पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर मूव किया. राइट? सो this is what? If I have given this statement 5 meter in east, so this means this value will tell us magnitude and this east word will tell us the direction. So अगर जहां पर magnitude and direction both का combination होगा, उस combination को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? Vector quantity. Is it clear with you, guys? Yes, sir. Yeah, sir, it's clear I will now. take one more example. Just give me a second.
you can consider, suppose this is a box. This is what? A box, right? Now I have to apply the force of 2 Newton. Can you see this 2 Newton? So 2 Newton मैंने अप्लाई किया. अब मुझे कोई बता सकता है कि 2 बोलने में थोड़ा सा ठीक है, मैं इसको 3 कर देता हूँ. 3 न्यूटन. ओके, सो 3 न्यूटन फोर्स मैंने अप्लाई किया यहाँ पे. कोई मुझे बता सकता है कि 3 न्यूटन फोर्स किधर अप्लाई किया? तो साउथ नहीं, इसमें अप डाउन भी हम चल सकते हैं. अप भी बोल सकते हो, डाउन भी बोल सकते हो. ठीक है, डाउन, 3 न्यूटन डाउन. ओके. कोई मुझे बता सकता है कि मैंने फोर्स 10 न्यूटन किधर अप्लाई किया? टू द राइट. टू द राइट. सो 10 न्यूटन जो है वो तो मैग्नीट्यूड बताता है एंड राइट और लेफ्ट डायरेक्शन बताता है. तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ स्केलर क्वांटिटी के, वेक्टर क्वांटिटी के, कि कौन कौन से स्केलर में आते हैं. तो एक तो पहला हो गया हमारा डिस्टेंस. क्या हो गया? डिस्टेंस. उसके बाद आता है स्पीड. उसके बाद आता है टेम्परेचर. राइट? वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स मुझे कुछ रब करना पड़ेगा. शैल आई रब इट? या, ओह सॉरी मैं गड़बड़ कर दिया. ओके, गिव मी अ मोमेंट. आई विल यूज दिस पेन. गिव मी अ मोमेंट गाइस. मैं एग्जांपल फिर से लिख देता हूं. तो हमारे पास एग्जांपल में डिस्टेंस, स्पीड, temperature, these are the examples for scalar quantity. And for vector quantity, you can consider displacement, another one velocity, another one force. So these are the examples. अब बहुत सारे होते हैं, मैंने बस 3 एग्जांपल्स आपको दिए हैं. एग्जांपल बताइए कोई. टेम्परेचर मैंने बोला कि अभी का टेम्परेचर क्या है, कोई मुझे आंसर कर सकता है? Sir, I have a question. Yes, tell me. Scalar. Like you said that a magnitude is the only aspect of scalar quantity. So that means that how much like magnitude, like it's the quantity that is used. So under that, you're trying to say that magnitude can be direction, speed, and temperature? Pardon? I'm trying to say that you just said that under scalar quantity comes magnitude, and then you gave us examples of distance, speed, and temperature. Right. So what is that supposed to mean in that case? Okay, अभी वही तो मैं अभी पूछा हूँ. कोई मुझे बता सकता है what is the temperature right now? एग्जाम्पल दीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, आप एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे. 30 डिग्री, 40 डिग्री, लाइक दैट, राइट? Yeah. कोई मुझे बता सकता है? 43, I guess we can take. 32, 33. ओके, 32, 33, नो प्रॉब्लम. ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल. अब मैंने यहाँ पर लिखा वर्ड 33 डिग्री सेल्सियस. अब कोई मुझे बता सकता है कि किधर जा रहा है ये टेम्परेचर? कोई मुझे बता सकता है? Sir, it can't really go anywhere because it's more of a scalar quantity, I guess. सना, ये किधर जा रहा है 33 डिग्री सेल्सियस? मालूम है कुछ? किधर जा रहा है मतलब I didn't get that. किसी डायरेक्शन में कोई जा रहा है ये? अभी मैंने एक फोर्स का एग्जांपल लिया था, तो वो किसी डायरेक्शन में हम अप्लाई करते थे, राइट? I think it will be in all directions because no, that cannot be possible. I don't know. Here, it's just what? It's just a value. How much? It what? Just a value. Value. How much? So it's represents just magnitude. What does it represent? It represents just a magnitude. That's why I have given temperature is a scalar quantity. Do you understand now? Sana, is this clear now? Yes, sir. ओके, मैंने फोर्स को वेक्टर में क्यों रखा? बिकॉज हमने अभी एग्जांपल में देखा था कि हम फोर्स अप्लाई जब कर रहे थे तो अप, डाउन, राइट, लेफ्ट हम ऐसे कर सकते थे, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव सेड द फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी.
So do you clear with the scale? What is a scalar and what is vector? Scalar में कोई भी वैल्यू सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रहता, तो वो स्केलर क्वांटिटी कहा जाएगा. Is that clear with you guys now? Yes, sir. Please make a note of it fast. Noted? Done, sir. Okay, fine. अगर कुछ डाउट है तो मुझे अभी पूछिए. Any doubt? Sana, Anika, any No, doubt? no, sir. Okay, next topic we have displacement. What we have? Displacement. जरा ध्यान से इस टॉपिक को करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, सो द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? एनीबॉडी कैन टेल मी? Anybody can tell me what is the definition of Displacement is the shortest route. It's Oh, the shortest distance. Tell me. Anika, you can say. Sana, you go. No, it's not right. Sana, you tell me what is the definition of displacement? Okay, so displacement is the shortest distance between two places, the original point and the final location. Right, correct. Okay, fine. So we will write down here the definition of it. The length between initial position and final position is called displacement. Please note with me. Second, अच्छा, दूसरी चीज, अगर कुछ नोट करने से छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं है, ये सारे सेशंस रिकॉर्डेड हैं, सो यू विल गेट रिकॉर्डेड ऑफ दिस. कोई डरने की बात नहीं है कि छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. फाइन. ओके, नेक्स्ट इज द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. SI unit of displacement is meter. Third point, it is a vector quantity. It is what? Vector quantity. Guys, please make a note of this. मैं आपको कुछ examples इस पे कराऊंगा. Please make a note fast. Hello. So just a minute. Okay. Third done. Okay. So done. Done. Okay, fine, perfect. So just give me a second. Yeah, that's fine. Give me a moment, guys. Shape tool and the shape tool triangle. Kahan gaya mera? Okay, the line tool, I will utilize it. Oh, sorry. It's okay. मैं ऐसे ही draw कर देता हूँ. Okay. Suppose that this is our right angle triangle. So I have taken here AOB. What I have taken? I have taken AOB. Now you can see I will start my journey from this one, A point, right? And I'm moving along this path. I'm moving along this path. So can you see how I reached to the B point? Now my question is,
suppose that this one I have taken 3 meters and this one I have taken 4 meters. So what would be the distance? What would be the distance and what would be the displacement? Anybody can say about it? Anika, Sana, tell me. So I think the distance will be the distance from A point to O plus O to B. Right. So 4 plus 3, which is 7. Correct. So distance will becomes, distance में याद रखिएगा कुछ नहीं Yeah. करना है, बस जैसे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसकी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, राइट? तो So अब यहाँ this is 3 plus 4, 7. yes, so meter. 3 plus 4 that goes to be meter. 7 meters. And मतलब displacement will be the distance Five. A Five. to B. 5 3 कैसे हो गया? square plus so we use the Pythagoras theorem. Yeah, and we'll use the Pythagoras. Right. 3 So square both of you plus know that. So ये जो line है जो कि मैं ग्रीन कलर से यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा, ये लाइन हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा. और शॉर्टेस्ट पाथ करने मतलब कि लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन. So this is what? This is my initial position, right? This position is what? This position is the initial position and this position is my final position. So we can simply say the length between the initial and the final is just this line, and we can utilize it with the help of Pythagoras theorem. So we can say this is the 5 meters. Is this clear with you? Yes. Is this okay? So please make a note of it fast so we can move. जल्दी से इसको लिख लीजिए. Done? Guys, done? Shall I move? so done. Okay, I'm moving. सर आप जल्दी से नोट कर लेना. मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जरा आप लोग इस क्वेश्चन को मुझे बताओ. What you can see here? What you can see, guys? Anika? I see a circle with with the radius marked. Okay, fine. I will start my journey from this point, right? From the A, and I am moving along anti-clock. This direction is what? Anti-clock direction, right? सना आपको पता है anti-clock क्या होता है? Clockwise, anti-clock? Yes. अनिका आपको? Anika? हाँ सर पता है. Okay, so I am moving anti-clockwise direction and I will stop where? I will stop at the point A again, right? So now you guys will tell me what value will be the distance and what will be the displacement. कौन बताएगा? Displacement और distance क्या होगा इस केस में? Question में दोबारा. You're moving from point A to A to A. So मतलब in one rotation, in Sir, displacement is the distance in this case. displacement? In this case, it's the distance is the displacement. Wrong. displacement will be 0. Displacement will It will become be here zero zero. because initial and final position is same. Right. Initial and final position is same. So अनिका एक बात बताइए, घूम कर आप वहीं आ जाते हैं, तो कोई डिस्टेंस बच गया क्या आप लोगों के बीच में? कोई shortest distance है नहीं, there's no option besides. तो ऑप्शन कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बचा ही नहीं उसमें, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0. ठीक Okay, है? sir. Yeah. समझ में आई बात? Yeah, Okay. yeah. अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इस केस में? So we're given the radius. So हाँ. I think we'll apply the formula of circumference. Good. And Circumference. Because हमको कैसे चलना है? हम इस रास्ते पर चलेंगे, right? और Yeah. हमने मैथ्स में सर्कल में पढ़ा है कि ये क्या बोलते हैं? सर्कल में सर्कमफेरेंस होता है. Circumference, yeah. तो हमको क्या निकालना पड़ेगा इस केस में? Circumference, right? So we will find out what is the formula for circumference of circle. Anika? Pi, no, 2 pi r. Good. No, pi. Oh wait, yeah, I am Good. always confused between it. Circumference of circle
circumference of circle is just 2 pi r, right? So it will become 2 and 22 by 7 into 7. So it will be cancelled. So it will give me 44 meters. So your distance will become here 44 meters. Is that clear, guys? Please make a note of it fast. ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ. इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ सकते हैं वो लोग. We were given a worksheet like this by Ashu ma'am. There was questions, some kind of questions like these. Okay. जल्दी से नोट कर लीजिए. Done? सर्कल रफली बना लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि कंपास उससे ही बनाए हम प्रोटेक्टर से. आपको ये सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. बट वीडियोस कुछ दिन बाद मिलेंगे, तुरंत नहीं मिलेगा. After 2 to 3 days. Sir, I'm done. Okay, Sana, done? Yes, sir. Okay, I have to raise it. Okay, guys, I have another question. Please be careful. Okay. I will write down the points. A, B, C, D, E, F, and G. This is, you can consider as 5 meters, 2 meters. You can consider as 4 meters. You can also 2 meters take it. Okay, guys. So, and I will give you little idea. This dot is only for your understanding, nothing else. This is not the line, right? Now, I am moving along this path. I'm moving along this path, okay? And I'm going towards this, and I will finish my journey here. Is that clear? Question is clear with you? Sananika? No, sir, I didn't get it. What you're trying to ask? I'm saying that I will start my journey from the point A. I will move along these points, A, B, then C, then D, then E, then F, and then G. Okay? You have to tell me what is the distance traveled, or you can say total distance traveled. And so also I have one more question. There is some, I don't understand the number. Is it 2 after 5 meter from B to C? What is the distance? B to C is 4. No. C to D is 4. B Oh, to C. 2. Okay. 2. So the distance will be 5 plus 2 plus 4 plus 2 plus 5 plus 4. Go ahead. Displacement, total displacement. Yeah, so displacement, just a minute, I'm telling you the distance first. Distance will be 5 plus 2 plus 4 plus 2 plus 4 plus 5. So distance is that? Yeah. No, wrong. No, but sir, see, if we consider this as a no, I'm not able to explain it. But हिंदी में बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बताओ. So I don't even know how to explain it now. Okay, That's the ठीक है, problem. कोई बात Language नहीं. is not the problem. आप सही हो, but आपने कहीं छोड़ दिया कुछ. GF छोड़ दिया आपने last में. Achha, okay, so that will also be 2. Yes, so you have to add them together. Anika, can you hear me? Yeah, I Anika, can hear you. Yeah, I can hear you. do you understand? For finding the distance, Yeah. I'm talking about the distance traveled. So distance traveled में कुछ नहीं, पूरा रास्ता जितना भी है Add करना है. सबको ऐड कर दीजिए. ऐड कर दिया. अब यहाँ पर मैंने नहीं दिया था,
तो सिंपल से देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे वर्कआउट कर लूं तो ये हो जाएगा जी 5 और यहाँ 4, तो टोटल 4, that is 9। 9. तो So ये 9 plus 2, 11, 11, 15, ये यहाँ 7, 9 और ये यहाँ हो गया 2 अगेन। 22, right? 22, तो ठीक है, 24, तो 24. 5 5 2 5 9 10 11 11 2 13 और 13 और 25, I 15 guess. No, 24. 24 meters। कौन मुझे बताएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में फास्ट? Displacement will be A to G. So to find that, I think. Is it 2? Okay, yeah, I got it. I got Yes. it. I got it. Answer Answer is 2. A to G, simply. 2 Yeah, A to meters, Z, it'll be 2, yeah. 2 meters down. What will be the Yeah. answer? 2 meters down. 2 meters down, or you can say अगर कोई डायरेक्शन दे रखा है तो 2 meters south. Is that clear, guys? Yeah. डाउन लिखना है तो डाउन लिख लीजिए, अदरवाइज यू कैन से 2 meter south. Yes. Is that clear, guys? Yeah. Okay, please make a note fast. ये डायग्राम फटाफट बनाइए, रफ हैंड से नोट कर लीजिए इसको. Okay, This is sir. very important one. We will go for one more problem, and after that we will go for next part of it. स्केल की जरूरत नहीं है, रफ हैंड से आप ड्रॉ कर लीजिए. So मैंने स्केल से बना लिया. Okay, that's fine. So सना एंड अनिका, आप लोग को चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ आ रही हैं यहाँ पे या नहीं आ रही हैं? Sir, it's very clear. I understand everything till now. Yeah, Okay. sir. Okay. Okay, नोट कर लिया तो बताइए, मैं प्रोसीड कर. Yeah, sir. I've just drawn. Shall we proceed? Guys, tell me, shall we proceed? Just a minute. Okay. थोड़ा Yeah, सा sure. स्पीड लिखने की बढ़ाइएगा आप सभी लोग. Okay? वरना बहुत स्लो हो जाएंगे हम. So done. Okay, I'm moving ahead. Okay, I have one more problem. Suppose that Sana is going to Anika's house. Okay, this is Sana house. This is Anika's house. So she is going to her house. Okay, fine. Now after that, what happened? She took a turn and she come back here. And she reached here. Okay. Now, this distance from Sana house to Anika house, I will take out about 5 kilometers. Okay. This I have taken, suppose this is one park. So this is about 1 kilometer, right? And this total distance I have taken about 6 kilometers.
right? So now you tell me, what is the total distance? What is the total distance and total displacement? Tell me, guys. The total distance is 13 kilometers. Okay, fine. What about the displacement? Between my house and Sana's house, right? It's 5 No, kilometers. no. Or No, so I think I know, but like between where? Like which two मैंने points? डिस्प्लेसमेंट पूछा. I have asked displacement. उसका मतलब क्या हुआ? Initial position to final position, right? yeah, so but so Okay. the position that you've shown here, It's नहीं, 1 kilometer. It's 1 kilometer. yes, आप मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये लौट कर यहाँ आ गए, right? So this is your initial position, Sana house. This is the final position. okay, so 1 kilometer, right? So 1 click. अगर मैं यहाँ पे -1 लिख दूं, देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखा मैंने, -1. तो क्या मैंने, मेरा आंसर गलत है क्या? गलत है? Yes. नहीं. अब मैं एक चीज तो बता, मैं ये ग्राफ में ये वायु वेट, मैं एक चीज बताता हूँ. जब आप नंबर लाइन पढ़ रहे थे तो आपने यहाँ पर 0 लिखा था, राइट? राइट हैंड साइड जब आप बढ़ते थे तो आप क्या लिखते थे? प्लस. और जब लेफ्ट हैंड साइड आप बढ़ते थे तो आप लिखते थे माइनस, राइट? तो अगर मैंने यहाँ नंबर में लिखा है, मैं मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा डायरेक्शन में, तो ये माइनस सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जहां से स्टार्ट हुआ उसके लेफ्ट में आएगा, राइट? सो इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. अगर मैंने ऐसे लिखा तो भी, या फिर मैंने यहाँ पर -1 लिख दिया तो भी, दोनों ही केस में आंसर सेम है, आंसर इक्वल है. माइनस इज रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पर जो ये माइनस सिंबल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स जस्ट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन. डू यू क्लियर गाइस? कि कभी ऐसा हो, अच्छा इसमें हमने क्या माइनस प्लस कुछ लिखा क्या? नहीं लिखा है डिस्टेंस में. क्यों? बिकॉज द डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो हम I didn't understand. ओके, देखिए, अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, आपने किया होगा आई थिंक. जब आप नीचे ऊपर जाते हो तो क्या लेते हो? पॉजिटिव लेते हो ग्राफ में? सना, Yeah. ग्राफ में जब आप ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव लेते हो, जब आप नीचे आते हो तो क्या लेते हो? मैंने कभी नीचे का करा नहीं, so I don't know. ओके, अच्छा ठीक है, मैं सिंपल सी एक बात बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अभी आप नोट कर लो. आई थिंक ओनली वी हैव द 5 minutes. सो मैं नेक्स्ट सेशन में इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ एंड एवरीथिंग. अभी आप जस्ट नोट कर लो कि माइनस साइन जब आता है किसी फिजिक्स में, जब माइनस साइन आता है, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स में जब माइनस साइन या प्लस साइन आता है, दैट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन. इट्स नॉट रिप्रेजेंट्स द, Okay, I understood. क्योंकि -1 किलोमीटर कहीं होता है क्या? आप मुझे बताओ. आप -1 किलोमीटर चल कर गए, ऐसा कोई बोलेगा तो कुछ मतलब निकला उसका? नहीं. माइनस क्या है कि अच्छा हाँ, माइनस क्या है कि आपको जाना था फॉरवर्ड, बट आप फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड जा रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग बैक. सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग माइनस. नाउ इज इट क्लियर? Yes. सना, मतलब कि माइनस जो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है. प्लस और माइनस हमारा जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. एग्जांपल ट्रेन का देखिए, ट्रेन आगे बढ़ता है सिर्फ, राइट? पीछे नहीं चल सकता. अगर ट्रेन पीछे चलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रेन इज गोइंग -10 meters और -10 kilometers. इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेन पीछे की तरफ जा रहा है, राइट? गॉट इट? Yes. Okay, so please make a note of this part. Done?
डन गाइस? Yeah. ओके, ठीक है। अभी जो है हमने ये पार्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास स्पीड, वेलोसिटी, मैं इस पे लिख देता हूं। जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये 3 टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे पढ़ लेना, पढ़ के आना, राइट। एंड ग्राफ इसके बाद हम करेंगे। जितने भी टाइप से ग्राफ हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम सारे ग्राफ्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एक साथ। तो हमारा नेक्स्ट सेशन का टॉपिक रहेगा स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं। तो आप लोग का काम बस ये है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और इस पर हम पूरा फोकस करेंगे। इज दैट क्लियर विद यू? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। तो अनिका, आप ये बताइए आज आपने क्या सीखा यहाँ पे? So we learned about like the scalar and vector quantities. We learned about distance. We learned about displacement, and yeah, that's pretty much it. I think. Okay, so everything was clear? Yeah, yeah, Okay. everything. पहले से कुछ नई चीजें सीखने को मिली? Definitely. Okay. सना, आपने क्या नया सीखा है यहाँ पे अभी? So, like I've studied this before, but I've not understood it very clearly. But over here, I was able to put it clearly into words and actually understand it. Okay. So अभी आपको सारे टॉपिक इन द सेंस कि जो मैंने अभी पढ़ाया है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन एंड द रेस्ट, so these 4 things are clear with you, right? Sana, is this clear? Yes, sir. Okay, fine. ठीक है guys, तो हम जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे और फर्दर हम लोग इसमें देखेंगे कि स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको कैसे हम लोग क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें हम सारा कुछ डिफाइन करेंगे। इज दैट क्लियर? फाइन। Yes, sir. ओके, ओके, Sure. ठीक है। Yeah. तो तब तक हम लोग चलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर। Yes, sir. Thank you, sir. या, ओके, Thank you, sir. या, बाय। Thank you. Stay connected.